Assalamu alaikum. We are starting this class. This is an extra class for our title, which we are running nowadays in our class. The title is uh, Superposition, and we are starting with the title Important Phenomena of Waves. We are starting with this. सबसे पहले you have to give this heading Important Phenomena of Waves. सर आगे बढ़े सर कर लिए। Good. सर और कोई है ही नहीं सर, मैं ही हूँ। I know that data is there. सो देखो, अब हम इसमें पहली चीज जो रख रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज ऑफ वेव्स। दो इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं, one is called diffraction and second is called interference. In the second phase of this chapter, these are the two important phenomena. तो अब आप इसकी हेडिंग डालोगे, इस लिस्ट को कॉपी करोगे कि दो मेन फिनोमिनाज हैं वेव्स के, डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। यू हैव टू कॉपी दिस। डन सर। अब देखो, वी आर स्टार्टिंग विद डाइफ्रैक्शन, सो हम इससे शुरू करेंगे। तो आपको यू हैव टू गिव अ स्पेस ऑफ 2 लाइंस, यू हैव टू स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। गिव द हेडिंग डाइफ्रैक्शन। सर डन। अब देखो, पहला कॉन्सेप्ट बनेगा कि डाइफ्रैक्शन होती क्या है। डाइफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव as they pass through a narrow slit. This is called diffraction. Look at this. This is called diffraction when waves pass through a narrow slit, like they are coming, they bend on the edges of the sharp gap. This phenomena is called diffraction. So we first put the first definition: bending of waves as they pass through a narrow slit. You have to copy the first definition. डन सर। This is diffraction, and diffraction, during diffraction, wavelength does not change. Now, this is a very critical point when you draw these diagrams. Examiner want that when you diffract, when you show diffraction, the lambda should not change. So now this is our next concept. Diffraction में wavelength नहीं बदलता. You have to copy this. डन। उसके बाद यू हैव टू कॉपी दिस डायग्राम नीटली। नीटली का मतलब है कि दोनों तरफ वेवलेंथ शुड नॉट चेंज।
diffraction is the bending of wave. So this diagram is showing the bending of wave, and the examiner wants कि ये जो wavelength है ये ना बदले. This diagram shows diffraction. अब हम इसको प्रोसीड करते हैं. लैम्डा शुड रिमेन कांस्टेंट. हमारे केस में सवाल में ये इंपॉर्टेंट है कि जो लैम्डा है वो नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि लैम्डा चेंज हो जाए तो वो रिफ्रैक्शन होती है. नाउ आई एम पुटिंग द सेकंड डेफिनेशन. अब सेकंड डेफिनेशन क्या है? व्हेन वेव्स कम अक्रॉस एन ऑब्स्टिकल दे स्प्लिट ओवर इट. जैसे आप पानी आ रहा हो ना, उसके रास्ते में कुछ चीज रख दें, कुछ स्टोन रख दें, कुछ स्टिक रख दें, तो पानी उस पे ना स्प्लिट हो जाता है. जो वेव्स होती हैं जब वो किसी ऑब्स्टिकल से गुजरती हैं तो इस तरह वो स्प्लिट हो जाती हैं. दिस इज द सेकंड डेफिनेशन. This is the second definition of wave, definition of diffraction. So you have to copy the second definition now. When waves come across an obstacle, they split over it. This is diffraction. सर एग्जाम में कौन सी लिखेंगे? दोनों में से अच्छा, जो बाय डिफॉल्ट है वो पहली वाली लिखते हैं, जो सेकंड वाली होती है वो जरूरत पड़ने पर होता है. जो पहली है, द फर्स्ट डेफिनेशन इज द डिफॉल्ट डेफिनेशन. ओके. नाउ लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स डू मीट आफ्टर द स्प्लिटिंग लाइक वाटर वेव्स. अब जो वाटर वेव्स होती हैं वो एक मर्तबा स्प्लिट तो हो जाती हैं, जैसे कोई ऑब्स्टिकल हो, कोई ब्रिज आ जाए. तो अब बोर्ड पे देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, अब ये देखो स्प्लिट हो गई. दीज आर द लॉन्ग वेवलेंथ, दे स्प्लिट एंड दे मीट अगेन. लेकिन जो शॉर्ट वेवलेंथ वेव्स होती हैं इस तरह, इनका मसला ये है दैट दे डू नॉट मीट बैक लाइक लाइट रेज. once they split over once they split over, they do not meet and they generate shadow regions. Now you have to give a heading, degree of diffraction. Now व्हाट इज द डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या है? देखो, डाइफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि वेव्स बेंड हो जाती हैं व्हेन दे गो अक्रॉस अ एज, व्हेन दे बेंड ओवर द पॉइंट. दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ बेंडिंग या एक्सटेंट ऑफ स्प्रेडिंग. सो वेव्स जो होती हैं वो इस तरह स्प्रेड आउट करती हैं, डिग्री ऑफ बेंडिंग होती है. दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन. डिग्री ऑफ, अच्छा पहले ये कॉपी होगा कि डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन का मतलब ये है कि वेव्स कितना बेंड होंगी.
अब देखो हमने क्या बात समझनी है कि जो वेव्स किसी स्लिट से गुजरती हैं, अब जैसे इफ वी मेक अ स्लिट हियर, तो अब ये वेव्स आ रही हैं, दे विल बेंड। अब ये कितना बेंड होंगी, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन। डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फीचर्स, वेवलेंथ कितना है वेव का, और जो आपका स्लिट है उसकी विड्थ कितनी है, स्लिट वाइडर है या स्लिट नैरो है। यू हैव टू कॉपी दिस। देखो, डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। So degree of diffraction, वेव कितना बेंड होगी, दिस डिपेंड्स अपॉन टू फीचर्स, वेवलेंथ कितना है और स्लिट की विड्थ कितनी है। अब जरा इसको देखें, लैम्डा ऑफ रेड, जरा इसको देखिएगा, रेड का वेवलेंथ ब्लू से ज्यादा होता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे, द लेफ्ट साइड वेव इज बेंडिंग मोर, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसके अंदर बेंडिंग ज्यादा होती है। आई रिपीट द कॉन्सेप्ट, the wave with greater wavelength has a greater degree of bending। अब देखो ब्लू में भी डाइफ्रैक्शन हो रही है, लेकिन ब्लू में डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन कम है। जो ब्लू है उसमें डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन कम है। स्लिट विड्थ का क्या मतलब है, जो स्लिट विड्थ होती है वो आपकी साइज है। अब लेफ्ट वाली स्लिट नैरो है और राइट वाली जो स्लिट है वो वाइडर है। इससे क्या होता है, जो नैरो स्लिट होती है उससे ज्यादा डाइफ्रैक्शन होती है, और जो वाइडर गैप होता है उसमें डाइफ्रैक्शन कम होती है। नैरोअर स्लिट्स हैव अ ग्रेटर डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन, और जो वाइडर गैप्स होते हैं वहां पर डाइफ्रैक्शन जरा कम होती है, क्योंकि वेव को कम मुड़ना पड़ता है। द डॉटेड लाइंस वी नॉर्मली ड्रॉ आर शोइंग द ट्रफ एंड द अदर लाइन इज शोइंग क्रेस्ट। नाउ diffraction and intensity, you have to give this heading now। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, देखो, इंटेंसिटी इज द ब्राइटनेस ऑफ अ सिग्नल। सो फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग दिस क्लास, तो जो आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो इंटेंसिटी है। जब आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो वो जो लाइट की ब्राइटनेस होती है, दैट इज इंटेंसिटी। What happens when diffraction occurs? Due to diffraction, a wave spread out। उससे क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है और इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, डाइफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू डाइफ्रैक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव decreases। You have to copy this।
Diffraction spread out the signal, and when the signal spread out, the amplitude decreases, intensity decreases. तो जितना वेव स्प्रेड आउट कर जाती है उतना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उतना सिग्नल वीक हो जाता है। देखो, अब लेफ्ट साइड पे देखो तो डाइफ्रैक्शन हो रही है, दिस इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। राइट साइड पे आप देखो कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। अब amplitude is decreasing, which shows that the signal is getting weaker. frequency नहीं बदल रही, वेवलेंथ नहीं बदल रहा, लेकिन सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, सिग्नल वीक होता जा रहा है। दिस हैपेंस व्हेनेवर डाइफ्रैक्शन अकर्स। जब भी डाइफ्रैक्शन होगा, सिग्नल उससे वीक हो जाएगा। Now, give the heading diffraction in water waves। दो लाइनें छोड़े, हेडिंग डाल दें डाइफ्रैक्शन इन वाटर वेव्स। Water waves are transverse waves, or they are very famous, and always people talk about them in lectures. वाटर में डाइफ्रैक्शन को या इंटरफेरेंस को या किसी भी फिनोमिना को दिखाना आसान है, एंड वी हैव एन apparatus which is called रिपल टैंक। जो रिपल टैंक होता है उसमें हम वाटर वेव्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, रिपल टैंक है। देखो यहाँ पर वी हैव अ डिपर एंड देयर इज अ सिंगल गैप हियर। अब यहाँ जो सिंगल गैप है, जब उससे सिग्नल निकलता है ऐसे यूं, तो सिग्नल जो है वो स्प्रेड आउट करता है। ये जो स्प्रेडिंग है, ये रिपल टैंक में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आप। उसके लिए आप एक स्लिट बना लें और स्लिट बनाकर वेव उससे पास करें। अच्छा, आपने हेडिंग डाली थी, दिस वाज द हेडिंग डाइफ्रैक्शन इन वाटर वेव्स। उसमें लिखिएगा कि वाटर वेव्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ रिपल टैंक। Water waves can be demonstrated in a ripple tank. You have to copy this. Once you copy, you can update me on the chat or on the mic. You can tell me once you have copied this diagram. This is a low level diagram, easy version of ripple tank. So let me know once you people have copied this diagram. Now,
So we move forward. This is the top view of a ripple tank. Water waves are coming and they are hitting a slit, single slit. जब single slit से waves are passing, they are bending on the edges. This is the top view of the water wave signal. जो ripple tanks होते हैं उसमें we have a pattern, we have a screen below the glass tray and we can see the image there. So ripple tank में water waves can produce diffraction. We can show the diffraction on a screen, projection screen. Now you have to give a new heading, interference. दो लाइनें छोड़कर नई हेडिंग डालो, इंटरफेरेंस. Now, what is interference? When two waves in the same medium and they are coherent. Coherent means 100% sync, identifying waves. When they meet at a point, they actually either support each other or oppose each other. So जब दो waves जो coherent हों, एक जैसी हों, एक point पे meet करती हैं, तो उसको कहते हैं interference. So now you have to copy this definition. Interference is the meeting of two coherent waves. Coherent लिखना बहुत जरूरी है. Two coherent waves moving in the same medium with the same speed. Interference is the meeting of two coherent waves moving in the same medium with the same speed. अब जो coherence होती है, it's a very important condition. जब भी interference की definition बनेगी, हमेशा आपको ये word मिलेगा. This is a very important term. Coherence is a concept when two signals are 100% alike, even 0.1% they do not differ. This is a perfect sync. This is called coherence. No, now give the heading coherence. Coherence means same nature, same wavelength, and constant phase difference. You have to copy this.
अब देखो कोहेरेंस का मतलब क्या है, दो वेव्स बिल्कुल एक जैसी हों एंड दे बोथ आर gamma rays, they both are x rays, within the x rays they have the same wavelength, और फिर ये भी जरूरी है कि वो सिंक हो, उनके दरमियान ज्यादा डिफरेंस ना हो, वेरिएशंस ना हो. दिस इज कॉल्ड कोहेरेंस. कोहेरेंस इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस. जब भी आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखनी होगी, you always will see this word coherence. It's a very important. Coherence का मतलब identical, 100% sync waves. You have to copy now this. Now, important conditions of interference ये पेपर में लिखने को आती है. एग्जामिनर पूछता है कि what are the conditions of interference. What are the conditions of interference? सबसे important condition है coherence. उसके बाद we have the next condition. The waves should be moving in the same medium. They should be moving with the same speed. They meet at a point, which is superposition. So these are the conditions of interference. You have to copy this. When waves interfere, they follow, you have to fulfill these conditions. Now, interference is an application of the principle of superposition. What is the principle of superposition? Actually, superposition means the waves meet end to end. They meet end to end and they overall either support each other or oppose each other. For example, now these are the two signals. One is a smaller wave and one is a bigger wave. They are not coherent. So when they're not coherent, it means no superposition. Acha, when there is no superposition, it means no interference. Interference is broadly classified in two types, constructive and destructive. When two waves interfere and they get bigger, it's called constructive. And when two waves meet, interfere, and their size decreases, it is called destructive interference. You have to now copy this.
Now we put our next concept. When waves meet exactly in phase, जब waves in एक phase में meet करती हैं तो constructive interference होगा. और जब waves exactly out of phase मिलेंगी, देखो अगर ये सिग्नल ऐसे है, नीचे वाला भी ऐसे हो तो उसको कहते हैं इन फेज. और अगर ये सिग्नल ऐसे है और ये वाला ऐसे है तो उसको कहते हैं आउट ऑफ फेज. अच्छा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो वहां पर एंटी नोड बनता है, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पर नोड बनेगा. यू हैव टू कॉपी दिस. Now, look at this screen. There are two types of waves, constructive and destructive. Now, remember this concept. Now, look at these two signals. Both are crest. अच्छा, जब दोनों crest होते हैं तो इसको कहते हैं exactly in phase. ये दोनों मिल गए तो amplitude डबल हो गया, 2a बन गया. और ये भी हो सकता है कि एम्पलीट्यूड 3a, डबल होना जरूरी नहीं है हमेशा, बट वो कन्वेंशन बोलते हैं. बट वन इज 2a, सेकेंड इज a, तो द सिग्नल बिकम्स 3a. अच्छा, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एक का क्रेस्ट है और दूसरे का ट्रफ. अगर दोनों बिल्कुल सेम साइज हो तो रिजल्ट में नोड बन जाएगा, जीरो एम्पलीट्यूड आ जाएगा. अगर है तो आउट ऑफ फेस, लेकिन एक बड़ा सिग्नल एक छोटा है, तो माइनस होने से जीरो नहीं बनेगा. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो होगी बट वो जीरो नहीं बनेगा. तो अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं होगी लेकिन नोड नहीं बनेगा. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी लेकिन नोड नहीं बनेगा. नाउ लुक एट दिस थिंग फ्रॉम अनदर व्यू. देयर आर टू सोर्सेस, वन इज कॉल्ड S1, वन इज कॉल्ड S2. दोनों से वेव्स बन रही हैं. जो कंटिन्यूअस लाइन है वो क्रेस्ट है, डॉटेड लाइन ट्रफ है, कंटिन्यूअस लाइन क्रेस्ट है. जहां क्रेस्ट क्रेस्ट मीट करेगा वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. जहां क्रेस्ट और ट्रफ मीट करेगा वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. दिस इज द पॉइंट. इससे क्या होगा कि ये जो डॉट्स हैं, जो फिल डॉट्स हैं ये वाले, दे विल बिकम द नोड. एंड दीज हॉलो डॉट्स, हॉलो पॉइंट्स, ये वाले जो हैं यहां पर एंटी नोड बनेगा. एंटी नोड का मतलब है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और नोड का मतलब है एम्पलीट्यूड जीरो है. ये कॉपी होगा. ट्रफ प्लस क्रेस्ट exactly out of phase. This gives me a destructive interference node. Node का मतलब याद रखो, नोड का मतलब है जीरो इंटेंसिटी.
Now look the second option. Crest plus crest और ट्रफ प्लस ट्रफ, इससे क्या होता है? एग्जैक्टली इन फेज। जब क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट होगा या ट्रफ प्लस ट्रफ होगा, इससे आपको एग्जैक्टली इन फेज मिलेगा। रिजल्टेंट फेज डिफरेंस अब की बार 0 होगा। जब क्रेस्ट क्रेस्ट मीट होगा या ट्रफ ट्रफ होगा, तो उससे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी एंड यू विल गेट एन एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब है इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। ये कॉपी होगा। सो अगर हम इस तरह नोड और एंटी नोड बनाएं, सो अ लाइन विद सर ज्वाइन, पीछे कभी लिखा नहीं था। इसको कॉपी कर ले। फिर लिख लिया। Good. So we are moving forward for this point that if you join all the anti-nodes, it is called an anti-nodal line. And if you join all the nodes, nodes क्या होते हैं? जहां इंटेंसिटी 0 हो जाती है। एंटी नोड्स वो होते हैं जहां इंटेंसिटी मैक्स हो जाती है। तो इससे ना नोड और एंटी नोडल लाइंस बनती हैं। अब you have to give a heading, interference pattern. This is our next title to start, but we will start it inshallah in our next class. For the time being, we just make it like this. Interference pattern क्या होते हैं? Interference pattern is a sequence of maxima minima. ये जो नोड और एंटी नोड है ना, नोड का मतलब है मिनिमम मिनिमा, और एंटी नोड का मतलब है मैक्सिमा। तो जो इंटरफेरेंस होती है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। You have to copy this, which will be the last thing for today. ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज जी।